Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. So what's up guys, welcome back to the channel. तो आज मैं आ गया नया गेम प्ले सीरीज़ लेकर जिसका नाम है एलन वेक रिमास्टर्ड। तो इस गेम के शुरुआत में ही मैंने एक आदमी को ठोक दिया गाड़ी से और उसका बॉडी इमीडिएटली वैनिश हो गया। मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ, अभी आगे ही देखना है क्या होता है। I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. तो मुझे अभी तो वो लाइट हाउस में जाना पड़ेगा। ये वही है ना जिसे मैंने ठोक दिया था। ये कैसे आ गया फिर से? भागो भागो भागो। अभी ये मुझे मारने आ रहा है। तो मैं इसके अटैक को डॉज भी कर सकता हूँ, पर इसको मारूँ कैसे? अरे हाँ, बच गया। I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. तो ये कैरेक्टर, मैं एक स्टोरी लिख रहा। तो मैं जो कह रहा था कि मैं एक स्टोरी लिख रहा था और वो ये कैरेक्टर उसी स्टोरी का एक कैरेक्टर है। तो ये कहाँ से यहाँ पर आ गया? अभी तो मुझे उस लाइट हाउस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक बंदा है। जल्दी से ब्रिज को क्रॉस करता हूँ, नीचे ना गिर जाऊँ। अभी टूट गया, बाल बच गया। ये मुझे पहचानता है पर मैं नहीं पहचानता इसको। ये वापस आ गया। इसको मार दिया। इसको घोस्ट टाइप कैरेक्टर है।
trapped. There was no way out. इस घर में से निकलना पड़ेगा अभी। मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा है। टीवी में से आके निकल रहा है। दरवाज़ा भी बंद है। अबे निकलूँ कैसे यहाँ से? The cabin was a death trap. I had to get out. खुल गया। Follow the light. Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. अच्छा, तो लाइट ही एकमात्र जगह है जहाँ पर मैं सेफ हूँ। Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, ये क्या पता है। और ये मेरे लिए सीढ़ी बना रहा है, ये अच्छी बात है। I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. रिवॉल्वर एमो मिल गया, लेकिन रिवॉल्वर तो नहीं मिला From अभी all तक। harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. तो लाइट से इसका डार्कनेस तो हट जाएगा। You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the गन gun. भी मिल गया। अच्छा, Good. You've done well. Remember what I taught तो- you. That is all. I will give you back your dream now. तो फ्लैशलाइट से डार्कनेस को हटाकर फिर गोली मार के इसको मारना पड़ेगा। A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. और भी आ गए। लाइट को बूस्ट करने से ये जल्दी डार्कनेस खत्म हो जाएगा। और भी आ गए। अबे भागो 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 भागो। खत्म। कहाँ से जाओ? वो रहा, लाइट के नीचे जाओ, लाइट के नीचे। फ्लेयर जैसा कुछ है, फ्लेयर गन है। हाँ, पबजी में तो देखा था ये फ्लेयर गन। ये शायद और भी पावरफुल होंगे, देखता हूँ इससे क्या होता है। इससे ही गोली मारता हूँ। ये पावरफुल है, लेकिन गोली कम मिलता है।
और आगे बूस्ट करने से बैटरी जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन उसका डार्कनेस भी जल्दी ख़त्म होता है। ये क्या है? भागो यार, पीछे आ गए, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। गाड़ी फेंक के मार रहा है। भागना पड़ेगा जल्दी। लाइट हाउस में जल्दी जाना पड़ेगा। पीछे आ गया, पीछे कुछ तो है। ये चीजें फेंक रहा है। जल्दी 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 जल्दी। बच गया, बच गया। ये क्या चीज है? दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से। अभी यहाँ से शायद ऊपर जाना पड़ेगा। ये बंद हो गया। भाई ये क्या है? He's here. Alan, wake up. Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. तो ये नाइटमेयर था। कुछ डेंजरस सा नाइटमेयर था ये। अभी तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी जगह है। अभी पहुंच के ही पता चलेगा। चेक पॉइंट। Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. तो इसके साथ बात भी खत्म Very nice. और I got a फोटो couple of खींचना really भी good खत्म। ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry.
You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. तो Alan, we're here. Come on, let's get back to the तो car. मैं एक फेमस राइटर हूँ, यानी मेरा जो कैरेक्टर है एक फेमस राइटर है, और मैं और मेरी We वाइफ need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. तो मैं एक फेमस राइटर हूँ I'd forgotten there were still places जो like this. मैं और मेरी वाइफ Towns where एक साथ everybody knew घूमने आए हैं. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake, Alan Wake. Oh God, I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe तो it. कार्ल स्टकी के I've got all साथ your books. मुझे I मिलने got जाना है, them और from the bookstore when वो they took कोई it out मुझे of the चाबी window. देगा. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Right. So much for a quiet vacation. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut number 6. ये कौन है? मुझे आड़े नजर से देख रहा था. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Hello? Mr. Stuckey? अबे ये कौन है? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. मुझे औरत ठीक नहीं लग रहा. ये जैसे Cauldron Lake is a special place. Very. जैसे आया मेरे सामने, मुझे Got lucky this time, young मुझे man. ठीक नहीं लग रहा है You ये can hurt औरत. yourself in the dark. This really ought to be fixed. Even that sounds better than your singing. Are you all right? The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your key! मुझे लगा ही था वो औरत ठीक नहीं लग रहा. मुझे कहाँ भेज दिया, मुझे किसकी चाबी दी, कहाँ भेज दिया, मुझे पता नहीं है. कुछ तो होने वाला है अभी. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, यानी ग्राफिक्स. हाँ. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right.
Don't worry. सच में बहुत ही I'll get you खूबसूरत है inside जगह। safe and sound before it gets dark. समंदर के बीच में एक घर। Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. वो पीछे नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा घर में अंदर लाइट है या नहीं, क्योंकि जो कैरेक्टर है इसकी बीवी को अंधेरे से डर लगता है। It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? देखना पड़ेगा। Hello? Anyone here? कोई भी नहीं है। ये क्या है? रेडियो। Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. The power cable goes to that shed over there. अच्छा, तो यहाँ से पावर ऑन करना पड़ेगा। The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. An old generator had been connected to the power ये cable. कौन सा खटारा से जनरेटर है? कैसे चल रहा है? The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay. I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. अंदर जाकर देखता हूँ। बाहर तो देख लिया, कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन साइड सीन बहुत ही खूबसूरत था। Alice? Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Surprise. Well, hello there. I'm not the तो क्या surprise. है? It's in the study. Go take a look. Okay. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! Everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. ये That's क्या not... था? Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! ये क्या था? God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. क्या हुआ? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. जल्दी चलो जल्दी चलो। Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! अबे ये क्या था? What the hell? Alice? Alice? नीचे गिर गया। Oh no! Keep going. Wake up. Alice?
अभी तो मैं समुद्र में कूदा था, अभी मैंने गाड़ी में कैसे आ गया? क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. यहाँ पर कैसे आया मैं? Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. तो अब मुझे गैस स्टेशन में जाना पड़ेगा। गया कार नीचे, मैं नहीं जाना चाहता नीचे। अभी वो भूतिया चीज़ आ गए तो मैं क्या करूँगा? ना मेरे पास टॉर्च है, ना गन है, कुछ भी नहीं है अभी। Hello? ये क्या है? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Manuscript pages. You can access them with F5 button. तो अभी मुझे तो अभी गैस स्टेशन में ऐसे तैसे पहुंचना है। Anybody there? Please, I've been in an accident. आ गया। अब वो घोस्ट टाइप चीज़ अभी आ गए तो मैं कैसे फाइट कैसे करूँ? The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Anybody there? Please, I've been in an accident. जितना अभी से डर लग रहा है। Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. I need to... Premium cabins for rent in... ये कौन है? Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. ये तो वही बंदा है जिसको मैंने चाबी के लिए ढूंढा था। ऐसा कैसे हो गया ये? कार्ल स्टकी। बेटा भागो यहाँ से, अभी भागना पड़े। I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. गन और टॉर्च दोनों मिल गए। अभी मैं इनसे लड़ सकता हूँ। बैटरीज मिल गए। बैटरीज चेक।
गन चेक, सब मिल गया। Yes. It's the latest. Great Falls Sheriff Station. Hello? Let you. इससे बाहर कैसे निकलो अभी? ये तो पूरा घर का ही गिरा देगा। भागो भागो, उतरो ही ऐसे, उतरो ही ऐसे। बच गया अभी। अभी तो निकलो यहाँ से, निकलो भैया यहाँ से। सबको मार कर आ, इधर आ। My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. इधर कुछ एरो बना हुआ, कुछ है शायद। Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. हाँ, और फ्लेयर मिल गया। कहाँ है वो? हाँ, फ्लेयर मिल गया तो अच्छी बात है। फ्लेयर हम उससे ज़्यादा वो घोस्ट को मार सकता हो। The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. It's rabbit season. जा। अबे यार, गलती से ये चल गया। नॉर्मल बंदूक चलाना था, ये गन चल गया। ये बॉक्स में गन और बैटरी मिल गया। चलो अभी कुछ तो याद आ रहा है। What the hell was that? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. कहाँ पर है बंदा? Stucky was still out there, in the dark, stalking me. तो घोस्ट का नाम स्टकी है। ये तो गलत रास्ता था। आ गए। अब ये फेंकने भी वाला है भाई। हाँ, परफेक्ट डॉस था।
रीलोड कर लेता हूँ। ये परफेक्ट डॉज था, स्लो मोशन में ऐसा था, बहुत ही अच्छा लगा है। हाँ, आसपास देखना पड़ेगा कुछ मिस ना हो जाए। वो वैसा चेस्ट, वैसा पहले जो चेस्ट मिला था ऐसा कोई मिस ना हो जाए। हाँ, ये रहा, ठीक है, मिल गया फिर से। ऊपर है शायद, ऊपर है। अंदर कुछ मिलेगा। इधर से नहीं, उधर से जाना पड़ेगा। इधर से तो नहीं जा सकते। ये गेम बीच बीच में इतना डरा देता है, मज़ा ही आ जाता है। हो रहा और फ्लेयर और बैटरी, चलो अच्छा है। तो मुझे तो अभी जैसे तैसे करके गैस स्टेशन में पहुंचना पड़ेगा। The staircase was broken. I had to make my way up some other way. तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए। यहाँ पर कुछ है, और बैटरी और गोली, स्टोरेज फुल। There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. जनरेटर ढूंढना पड़ेगा अभी। जल्दी से ढूंढो। ये लोग फिर से आ गए। एक शॉट में ही खत्म। ये अच्छा गाना है। यहाँ पर तो पहाड़ आ गया। अरे वाह, नया गन भी मिल गया है। शॉटगन है शायद। तो यहाँ से उठकर वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा रोड है। बस 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 बस। ओ नहीं, कैसे उठोगे? ओ रहा सीढ़ी। अरे गिर गया रे। सावधानी से उठना, जंप करना पड़ेगा। checkpoint reach.
Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around... और कितना दूर है वो गैस स्टेशन? फिर से चेस्ट मिल गया, चेस्ट मिल गया। ये चेस्ट मिलने से मुझे इतनी खुशी होती है ना, क्या बताऊं। Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am. Manuscript में The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. कहाँ से आवाज आ रहा है? Monster is the best with no contest. Monster dog is second best. The famous dog is. कहाँ से? अरे बच गया। कहीं से भी आ जाते हैं, डरा देते हैं। कहीं से भी आ जाते हैं और मुझे डरा देते हैं ये लोग। खेलने में तो मज़ा आ रहा है, फिर से पीछे आ गए। अबे यार, ये फेंकने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डार्कनेस हटे। मुझे रोशनी दिखते ही मुझे डर लग जाता है कि वो लोग ना आ जाए। तो 20 बैटरी में मैक्सिमम ले सकता हूँ, इतना ही काफ़ी है शायद। अभी तो इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। जैसे ही जंगल के अंदर जाता हूँ मुझे डर लगता है कि मैं बोल ही रहा था कि ये इसका आवाज़ आ गया। फिर से एक चेस्ट मिला है शायद। हाँ। इससे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे। बहुत सारे लोग आने से ये मारने से बहुत ही अच्छा होता है। इजीली मर जाते हैं ये लोग। गन मिल गया। गन की बैटरी कैसे हो सकती है? गन की गोली। वो शायद इस गेट का स्विच है। हाँ, गेट खुल गया। गेट खुल गया।
इसे यूज करने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो कोहरा ही कोहरा है। As you might think, it can be. It requires patience. Oh no. बहुत सारे हैं, बहुत सारे। The engine takes dropping tools. Easy. बहुत सारे आ गए। शॉटगन से मारा। शॉटगन से एक शॉट में ही मर जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा गन मिला है। अबे बच्चे, शॉटगन से एक ही गोली में मर जाता है। वो कैसे ऐसे वैसे जा रहा है, उसका दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके मारू कैसे? इसके तो मेरा हेल्थ। इसका डार्कनेस हटाना ही मुश्किल है। शायद यही इस चैप्टर का फर्स्ट बॉस फाइट है कि उस तरफ जाना पड़ेगा। जाकर देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पर भी गेट है। फंस गया। ये कितना तेजी भागता है। हाँ, एक बार डार्क में सट गया तो मारना मुश्किल नहीं है। खत्म। Stucky's body vanished, leaving behind only a ओ, मैंने lifetime of तब nightmares. गलत कहा था। एक कार्ल Assuming I'd reached नहीं the है, lights of the स्टकी gas था। station alive. और ये है इस गेट का स्विच। शायद मैं पहुंच ही गया शायद। अब और ना सामने आ जाए। I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. हाँ, मुझे पहले ये दिखा ही था। After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted itself. गैस स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा। पहले बाहर देख लेता हूँ कुछ मिलता है या नहीं। The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. एक हफ्ते से मैं गायब हूँ। अगर मैं एक हफ्ते से गायब हूँ तो मैं पहले समंदर में कूदा, फिर मैं गाड़ी से मुझे होश आया। मुझे कुछ याद नहीं है क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं है। फोन ढूंढना पड़ेगा पहले। वो रहा। Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. ये रहा फोन। Great Ball Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen,
I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. ये तो वही जगह है ना जहाँ पे मैंने आइलैंड में, जहाँ से मैंने कूदा था, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। सीरीज़ के दूसरे एपिसोड के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।